पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो वेलकम यू ऑल टू अगेन श्री चैतन्य चरितामृत क्लास। और पुनः एक बार बताना चाहता हूँ हिंदी प्रेमियों से कि ये एकमात्र क्लास होती है जो मैं इंग्लिश में लेता हूँ ताकि मेरी इंग्लिश याद रहे मुझे, वरना मैं भूल जाऊंगा बहुत जल्द। सो लेकिन फिर भी मैंने डिवोटीज इन हिंदी आल्सो वांट टू हियर दिस क्लासेस, सो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी डालते रहेंगे, बट एक्चुअली मेजरली द क्लास विल बी इन इंग्लिश। सो प्लीज मुझे कृपा करके शाप मत दीजिए। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या क्या चर्चा किया। हम अद्वैत आचार्य, we were discussing about the branch of Advaita Acharya, and we discussed about two types of branches. The first type of branch is Sar branch, yani ki bona fide branch, or in the same branch there is Asar branch also. Asar branch means ये लोग क्या है, deviate हो गए, पहले पहले अच्छे थे, later on they got deviated, so that's also one branch. But उनको भी गिना गया है ताकि we carefully choose our association, that's the purpose. Then we discussed about one big branch, Achyutananda, who is the son of Advaita Acharya, Krishna Mishra, the second son of Advaita Acharya, and Sri Gopal, the third son. And the people who have become Asar, offshoot branches or deviant branches, they are the rejected sons of Advaita Acharya. Only their names are mentioned. Sri Balram, Swarup, Jagdish. इतने अच्छे नाम हैं उनके, but they got deviated and they became Smarth Brahmins or Mayavadis. वैसा बन गए थे वो. Then the fourth branch was Kamalakant Vishwas. And moment we started discussing about our Kamalakant Vishwas, that time उन्होंने कुछ किया था, याद है किसी को? We started. He wrote a letter to the king. Remember? कुछ याद है? भूल गए? I know it's a long time back. एक महीने पहले की कहानी है. हम लोगों ने वहां छोड़ी थी. So he had written a letter to the king, and that letter had two parts. The first part of the letter was something which Chaitanya Mahaprabhu liked very much, because the first part of lecture explained that Advaita Acharya is the supreme personality of God. But in the second part, he wanted him to beg forgiveness कि 300 रुपए नहीं दे पाएंगे, माफ कर दो. This is contradiction. Chaitanya Mahaprabhu became very angry. अरे supreme lord is लक्ष्मीपति and उसको 300 रुपए की भीख मांगनी पड़ रही है राजा से. Yes, Kamalakant Vishwas is rascal, fool. He should never come to my house again. So that was the past time. वो लीला हुई थी. So anyone remembers the exact verse number where we dropped off last time? हम वही से शुरुआत करेंगे. So beautiful section, huh? 37. Okay, ठीक है. तो 37 से continue करना है. So till now what happened? Chaitanya Mahaprabhu punished. This Kamalakant Vishwas should never come to my place again. So this is what? Punishment. कितने लोग खुश हो जाएंगे अगर टेम्पल से बैन किया गया आपको? तो of course we will not do that unless something seriously is wrong. But किसी को टेम्पल से बैन कर दिया, आप कभी भी मंदिर आ नहीं सकते. Why प्रभु जी? Person will be happy? Yes. क्या हो गया? मैं बैन हो गया. No, we'll be devastated. The temple is our life. How can you take away our life from us? We'll be thoroughly devastated. But let us see here what happens. What Kamalakant Vishwas को कैसे लगता है when he hears the verdict of Chaitanya Mahaprabhu, and उसी टाइम पे अद्वैत आचार्य को कैसे लगता है, because अद्वैत आचार्य सर्वेंट ना, he's so मास्टर को कैसे लगता है, that is something we'll find out. आप लोग सब वीडियो ऑन करके रहिए प्लीज. वीडियो प्रकट लीला, नो अप्रकट लीला अलाउड.
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so here we are in the Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 12, entitled The Expansions of Advaita Acharya and Gadadhar Pandit, shloka number 37. Danda Shuni Vishwasa Haila Parama Dukkita Shuniya Prabhura Danda Acharya Harshita. So as soon as he heard the punishment that he has been banned from Chaitanya Alai, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के पास कभी मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, what happened to Kamalakant Vishwas? Parama Dukkhita. He became very unhappy. Parama Dukkhita. On the other hand, when Advaita Acharya heard about this, Advaita Acharya became happy. वो खुश हो गए. Now somebody में से वो थोड़ी बैन हुए थे. बैन तो वो हुए थे, इसलिए वो खुश हो सकते हैं. जो बैन हुआ वो कैसे खुश हो सकता है? Yes, there's a very deep inner meaning behind this, which Prabhupada explains beautifully in purport. So Prabhupada said that Advaita Acharya was happy because he understood that inner meaning. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Samoham sarva bhuteshu name dveshosti na priyaha. I envy no one, I am partial to no one, I am equal to all. ये equal है तो क्या है? Equal है इसीलिए Lord's blessing and his punishment both are same. There is no difference. So भगवान का punishment भी जो हो, that punishment is also as good as his mercy. So Advaita Acharya was saying that actually he has received great favor. कमलाकांत विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है उनको. He's got a big favor. It's not a punishment. Don't hit hard on yourself. So now this is something that Advaita Acharya is going to explain Kamalakant Vishwas. So that is the rest of the section. 38. विश्वासेर कहे तुम्ही बड़ा भाग्यवान तुम्हारे करिला दंड प्रभु भगवान. So Advaita Acharya saw that Vishwas is little नहीं, अच्छे से he's sad, he's दुखित, परम दुखित. So he told him, तुम्ही बड़ा भाग्यवान, you are very very fortunate. Why? Because तुम्हारे करिला दंड प्रभु भगवान. Personally Sri Chaitanya Mahaprabhu, is Supreme Personality of Godhead, has given you danda, punishment. So भगवान के कनेक्शन में आ जाए तो punishment मिले या blessing मिले, दोनों एक ही है. There is no difference. Correct? So that's how he starts. Next. Now he'll give him some encouragement. उनको थोड़ा आश्वासन देगा, अरे हमको भी मिला है. Yes, और बहुत सारे devotees को भी मिला है. Now sometimes ये सुन के अच्छा लगता है ना. The first time you get chastised by your senior. I got chastised. मुझे punish किया. When senior comes, another senior will come. What happened, प्रभु? मुझे डांट. अरे हमको भी बहुत पड़ा है. अच्छा आपको भी पड़ा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. That kind of pacification comes. So Advaita Acharya is going to give a little more examples. You see here? पूर्वे महाप्रभु मोरे करी न सम्मान दुख पाई मने आमी कैलू अनुमान. So before Chaitanya Mahaprabhu used to respect me a lot because I'm senior Vaishnava. मैं बड़ा हूं ना उम्र में. So Chaitanya Mahaprabhu used to respect me. He used to come and Karina Samman. He used to think I'm senior devotee. And I used to feel very sad. Dukkha paye mane. My mind used to be very miserable. Why he is coming and respecting me so much? He is Supreme Lord. I am his servant. So Hami Kailu Anuman. I made one plan. Now you see what plan you will make.
मुक्ति श्रेष्ठ करी कैनु वाशिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध या प्रभु मोरे कैला अपमान. So he said, मुक्ति ही भक्ति से हाईएस्ट है. Like that philosophy I started preaching. This is the philosophy called as Yoga Vasishtha. क्या बोलते हैं इसको? योग वशिष्ठ. So I started speaking about Yoga Vasishtha philosophy openly in my classes. माइक लेके सब डिवोटीज को बुला के जय राधा माधव गा के, मुक्ति ही परम, भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति के आगे मिलती है मुक्ति. सो एवरीथिंग आई स्टार्टेड मुक्ति कथा. ऐसे करके योग वशिष्ठ बोलने का मैंने स्टार्ट किया, शुरुआत किया. एंड महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु became क्रुद्ध है, he became very angry. Yes, मोरा कैला अपमान. Then he came to treat me with disrespect. Yes, मेरा प्लान काम कर गया. तो योग विशिष्ट is a मायावादी book, Prabhupada says, and it's full of impersonal understanding. उसमें लेश मात्र भी वैष्णव लोगों को आनंद मिलेगा नहीं. They'll Vaishnavas will be frustrated listening to some class. Imagine you go to a class, and in that class, except Krishna, everything is spoken. कृष्ण को छोड़ के सब कुछ बोला गया. आप लोग को खुशी होगी? नहीं, हम लोग कुछ लोग सोचेंगे टाइम देखेंगे, कुछ लोग इससे मोबाइल निकाल के थोड़ा निकलने का सोचेंगे यहाँ से. हाँ हरे कृष्णा प्रभु, हाँ हरे कृष्णा, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा बाहर आता हूँ. बाहर होके भाग जाएंगे वहां से धोती पकड़ के. We don't want to stay here. Nonsense. You want to speak about Krishna, we'll always be here. If you don't want to speak about Krishna, we will never come to such class. So there was no tinge of Vaishnavism. Vaishnavism का लेश मात्र अंश भी नहीं था. And of course, Prabhupada also says, योग वशिष्ठ क्या है? अभी eagerness, उत्सुकता बढ़ा के वो जाके पढ़ो मत, उसमें कुछ नहीं है. Devotees should totally avoid such literatures. Reading about Mayavadis, Yoga Vashishta, what is exactly, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं. And Chaitanya Mahaprabhu became very angry. And now you see what he will do. दंड पाया हैला मोरा परम आनंद, ये दंड पाइला भगवान श्री मुकुंद. ओ आपको पता है नहीं ना? I didn't tell you ना what danda he got. Chaitanya Mahaprabhu went on the Vyasasan, pushed down Advaita Acharya, started beating him. Punch, started beating him left, right, center, black and blue. He was beating him. ऐसा मारने लगा. And that time Advaita Acharya became very happy. Yes. अभी देखो कौन मार सकता है किसी को? Master can beat the servant. So who is master? देखो, he is master, I am servant. ये मुझे respect देते रहते हैं ना. I wanted to prove this. That is why I spoke Yoga Vasishtha. Then to his all his followers, to everyone, he proves very clearly that who is the master? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaurang Mahaprabhu is the master. And who am I? I am servant. क्यों? क्योंकि मैं पिट रहा हूँ. देखो अच्छे से मार दिया मुझे. And Advaita Acharya's wife Sita Thakuran almost fainted. मत मारो मेरे पति को. मेरा पति वैसे ही बुढ़ा है. Advaita Acharya is very old, right? So वैसे ही बुढ़ा है, बुढ़े को मत मारो बोल के she was beating her head. Hey, don't beat, like that she was beating. So Chaitanya Mahaprabhu came and actually beat Advaita Acharya. This Leela is very nicely explained in Sri Chaitanya Bhagavat. उसमें डिटेल में है लीला. First there is a Vishay Sannyasi. Vishay Sannyasi means sannyasi with wife. सन्यासी भी है और उसकी वाइफ भी है. Like that sannyasi's house Nityananda Prabhu takes Chaitanya Mahaprabhu. And then later on that sannyasi comes with daru. And Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda क्या है वो चीज क्या है? So Nityananda Prabhu asks him only, what is this? He said, Nityananda, this is Ananda. वैसे करके चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग इसका खाना खा रहे हैं. अरे फिर उसकी वाइफ आती है अंदर से. चैतन्य महाप्रभु बिल्ड अरे नित्यानंद कैसे लोग के घर पे लेके आते मुझे प्रसाद के लिए. Then he takes Nityananda, both of them run and with their clothes they jump into Ganges. गंगा के अंदर कूद जाते हैं. विष्णु 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 कौन से घर पे लेके आते नित्यानंद? अगली बार देख के आदमी देख के लेके आओ मेरे को. And then they go to Advaita Acharya's house in Shantipur to beat him. तो ये लीला बहुत सुंदर लीला है. Someday we'll discuss from Sri Chaitanya Bhagavat. And then here what he is saying, ये दंड पाइला भाग्यवान श्री मुकुंद. And Mukunda also got a punishment. Why? Because what Mukunda used to do? Mukunda
was always an associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, इनको but he ढकाला used to also go. क्या हो गया? ओके, किसी एक भक्त को स्फूर्ति आई तो हमने सबको म्यूट कर दिया. Yes, so Mukunda also used to go to मायावादीस और उनके प्रवचन में जाके बैठता था, उनके साथ भी सत्संग करता था और उनके सत्संग में भी आनंद लूटता था. मुकुंदा was not discriminated. He used to come to Vaishnav Sangh and Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, and he used to go to other organization also. उधर भी जाके अपना करता था. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu was doing Mahaprakash Leela. Mahaprakash Leela is one time when Sri Chaitanya Mahaprabhu openly displayed that he is Supreme Lord. He told everyone, मैं ही नारायण, मैं ही कृष्ण हूँ, come and worship me. अरे Mahaprabhu is openly receiving worship. So all devotees come and every devotees get mercy. Vasudev Dutt gets mercy. Haridas Thakur gets mercy. Even Kolavecha Sridhar, whom nobody knew, he also gets mercy. And after everybody receives mercy, then all devotees say, Mahaprabhu, what about Mukunda? Mukunda! Mukunda in the morning comes and nicely worships me with flowers. And later on with that same hand he has worshipped, he punches my nose. Devotees are confused. ये क्या बोल रहे हैं? मतलब मायावादी है. मेरे को पहले पूजा करते हैं वैष्णव की तरह. And later on becomes मायावादी. What is मायावादी? मायावादी कृष्ण अपराधी. फिर आके मेरे ही मुंह पे लाफा मारता है, बोलता है भगवान is impersonal. So that Mukunda I will not give mercy. So when you will give mercy? You will get mercy after 10 million births. यानी कि 1 करोड़ साल के बाद, 1 करोड़ जन्मों के बाद. And then devotees come to Mukund. Says Mukund, तेरे को नहीं मिला. ना कब मिलेगा? After 10 million births. As soon as Mukunda understood 10 million births, he starts dancing in ecstasy. मुझे मिलेगा, I will get mercy after 1 crore births. And when Mahaprabhu sees the change of attitude, he says, come, Mukunda, aa jao. So he accepts him and gives him mercy. So Mukunda also got punishment. Why? Because of supporting Mayavadis. एक और डिवोटी का भी कहानी बताए, उसको भी दंड मिला बोल के. और एक और ग्रेट 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 डिवोटी को भी दंड मिला. हु इज दैट ग्रेट डिवोटी? कैन एनी ऑफ यू गेस? पढ़ते हैं. ये दंड पाइला श्री सची भाग्यवती, से दंड प्रसाद अन्य लोक पावे कति. अरे महाप्रभु ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा. सच्ची देवी भाग्यवती सच्ची देवी also got chastised and punishment from Sri Chaitanya. मम्मी को भी नहीं छोड़ा आपने. He did not even leave his mother. So what is this लीला? इधर सिर्फ थोड़ा ही बताया. Actually she had committed offense unto Advaitacharya. So Sachi Devi used to think that मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप, he became sannyasi. Why? Because he used to go to the house program of Advaitacharya. And this Advaitacharya filled all the philosophy in his mind. उसको सन्यासी बना दिया. Yes? और विश्वरूप मेरा बेटा अच्छा बेटा था, वो घर छोड़ के सन्यास ले लिया. सब इस अद्वैताचार्य की वजह से. Like that she used to think in mind. कभी जाके अद्वैताचार्य को गाली नहीं दी. अद्वैत, तू कैसा आदमी है रे तू? मेरे बेटे को माँ से अलग किया, मेरी हाय लगेगी तुम्हें, मेरा शाप है तुमको. Nothing like that. Nothing like that. Only in mind she thought that this Advaita is responsible. इतना ही अपराध किया. So when Mahaprabhu was asked, what about Sachi Mata getting mercy? She will not get mercy. क्यों? Because she has offended Advaitacharya. Advaitacharya says, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है महाप्रभु, तेरे को प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है. You don't have any issue, but I have a problem. Then what is the solution? Sachi Mata has to fall at the feet of Advaitacharya and take blessings. Advaitacharya says, मैं नहीं देने वाला. And Sachi Mata, how will she fall at the feet of Advaitacharya? कैसे होगा? How will this happen? And later on, at one point of time, there was a loud kirtan. And that kirtan, Advaitacharya Prabhu was dancing like anything. Dance करते वो बेहोश हो गया. He fainted and he became unconscious. And that time Sachi Mata went, देखा, का blessing दे दिया, sorry बोल दिया. And then Sachi Mata was forgiven. Right? तो आपने मम्मी को भी नहीं छोड़ा, किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने. So like this he was trying to encourage our
Kamalakant Vishwas. समझे? So he told him that Mahaprabhu's mercy is, his punishment is mercy. ये दंड दे रहे, ये कृपा है. एंड डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो, मुझे भी मिला है, मुकुंद को भी मिला है, अरे सच्ची माता को भी मिला है. ऑल ऑफ देम गॉट दंड. लाइक दैट ही इज एनकरेजिंग कमलाकांत विश्वास. अभी देखते हैं कमलाकांत विश्वास के साथ क्या होता है. नेक्स्ट फर्दर व्हाट हैपेंस. एत कही आचार्य तारे करिया आश्वास, आनंदिता हैया ऐला महाप्रभुर पाश. So then after pacifying Kamalakant Vishwas, Advaita Acharya went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभु के कहे न तो मार न भुजिए लीला, आमा है ते प्रसाद पात्र करीला कनम कमा. Okay, so what he's saying, आमी ना बुझी ए लीला, I'm not able to understand your लीला, transcendental pastimes of yours, I'm not able to. क्या है ये महाप्रभु, क्या हो गया? What is he saying? आमी है ते प्रसाद पात्र करीला कमला, you gave him more mercy than me. अरे वो मेरा दास है, लेकिन उसको ज्यादा कृपा कैसे दे दिया आपने? Yes, how did you give him more mercy than me? So here he is telling that इसको ऐसा पनिश करके, बैन करके, आप, मुझे तो लाइफ टाइम बैन नहीं मिला, मुझे तो पिटा ही मिला, लेकिन आपने कभी मुझे छोड़ा नहीं. But you left him and you gave him more mercy. How did he get more mercy? I am not able to understand. See, devotees are very intelligent, no? हमारे हक भूये नहय प्रसाद, तुम्हारे चरणे अमी की कैनु अपराध. इतना कृपा मुझे नहीं दिया. You did not give me so much mercy. What अपराध did I do to you? ऐसा कैसे अपराध कर दिया मैंने? आपने मुझे कृपा नहीं दी, उसको ज्यादा दे दी. What offense did I do? So like that he is asking Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. See, why? What is the whole thing? Ki same principle. Prabhupada writes the same thing what I told you. That Mahaprabhu had bet him, but never told तू आज से मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा. ऐसे नहीं बोला, लेकिन उसको मार खाया, तो इसको ज्यादा मिला. He got greater favor. That's what Mahaprabhu, he's telling Mahaprabhu. Now you see what will Mahaprabhu do. एत शुनी महाप्रभु हासी तेला गिला, बोला या कमला कांते प्रसन्न हईरा. After hearing this, Mahaprabhu started smiling and laughing. Ha ha ha. I told Kamalakant किधर है, बुला उसको. Finished. हो गया. And प्रसन्न हईला. He became very happy with Kamalakant Vishwas. आचार्य कहे इहा के केने दिल दर्शन, दुई प्रकारे ते करे मोरा विडंबन. अरे क्या लीला चल रही है महाप्रभु इसके पीछे. महाप्रभु ने माफ कर दिया. अद्वैताचार्य बोले श्री चैतन्य महाप्रभु ने माफ कैसे कर दिया इसको? ये दिस फेलो इज अ चीटर, विडंबन, चीटर फेलो, एंड ही हैज चीटेड मी इन 2 ways. 2 प्रकार से चीटिंग किया मेरे साथ. इसको कैसे माफ कर दिया? अभी देखो, अद्वैताचार्य इज टेलिंग हिम मर्सी. नाउ व्हेन ही इज कमिंग, महाप्रभु ने माफ कर दिया. अद्वैताचार्य क्या कर रहे हैं? अरे कैसे माफ कर दिया? कैन यू सी? थोड़ा अद्वैताचार्य. This is why it is said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigye Bujai. You will never be able to understand the activities of Vaishnava. They are very, very complicated. दिमाग में आसानी से समझने नहीं आने वाले. Now you see here. शुनिया प्रभु रमन प्रसन्न हईला, दुहार अंतर कथा दुहे से झनीला. So here, who is Sri Chaitanya Mahaprabhu? Krishna. Who is Advaita Acharya? महाविष्णु. अभी कृष्ण और महाविष्णु के बीच की लीला ये दोनों ही समझ पाएंगे, और कोई नहीं समझ पाया. That's what is spoken here. Yes. So only both of them could understand.
each other's lila. So now Sri Chaitanya Mahaprabhu is going to give some transcendental instructions to Kamalakant Vishwas. What are those two things? Let's see. 49 to 52 instructions are going to be given. आप लोगों की वीडियोस ऑन होने चाहिए. Just reminding once again. प्रभु कहे बाउलिया चे कहे कर आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचार. You know what is बाउलिया? Yes, mad. ना इन व्रज भाषा जैसे बावली हो गई है क्या, बावला हो गया है क्या? So that बावला 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 बाउलिया, that is a root. So बावली बावड़ी हो गई है क्या? Local more अवधि it becomes बावड़ी, ऐसे शब्द. And in Marathi it becomes बावरी. Some song was there, राधा ही बावरी. So this word is very, very amazing word. So what is he calling him? Baulia. There is a Acharya who has written commentary. And he's called a Baula Geet. What is Baula? Baula means mental, mad fellow. But Geet, uska Geet, aise gaya hai. Because the goal of life, as per the Vaishnava Acharyas, the scriptures, is to become mad. But mad for Krishna. Yes, Krishna ke liye pagal banna hai. So we all have to become Baula actually. In one sense, this Baula is gali? No, it is praise. ये बहुत बड़ा सम्मान का किताब है. We all have to become Baula. So all acharyas in their song, they teach us how to become Baula. Baulu banna hai. So that is what Upper Sampradaya also. They are called Aula Baula. So those Baula people, artificially they behave like madmen. वो जानबूझकर पागल होते रहे. अभी सब लोग, so they call everyone. चलो अभी रोना शुरू करो. सब लोग रो अच्छे से रो और जोर से आंसू आने चाहिए. So they take glycerine and put. So like that they practice crying. That is Upper Sampradaya. Aula, Baula, Gauranga Nagarik, Nityananda Vamsh, Advaita Vamsh. So all these Upper Sampradayas were destroyed by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. That's why what we call him? Upper Siddhanta Dvanta Harini. So he destroyed all the Upper Sampradayas. So Prabhu Kaila, Bauliya, this you are a Kamalakant, tu kaun hai? Pagal hai. Bauliya. Aiche kahe kara. ऐसा क्या कर दिया तुमने? कुछ बिना जाने, without knowing anything what you have done. Why do you act like this? आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचार. तुमने क्या कर दिया? You have invaded the privacy of Advaita Acharya. That is the first mistake you have done. अब ये दो mistake थे ना? ये दो mistake कौन से है? महाप्रभु हार्ट में समझ गए. First thing is उसके private life में दखलंदाजी किया. दूसरा, उसके धर्म का नाश किया तुमने. That is the second offense that you did. You destroyed his dharma, his religious principles. You are damaging that. ये दो चीजें तुमने की. Two things. 50. प्रतिग्रह प्रभु ना करिबे राजधन विषयीरा अन्न खाइला दुष्ट है मन. See, what he is telling here, अद्वैत आचार्य जैसे लोग जो है वो कबू ना करीबे राजधन. They should never ever accept any kind of charity from kings. इसलिए charity और भिक्षा कहाँ से आ रहा है, किन से ले रहे हैं, ये बहुत important चीज है. Yes, this is a very important thing. I remember जब NVCC मंदिर बन रहा था, that time there was one very very famous, अब क्या बोलूं उनको, अब नाम तो नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाओगे. Famous chicken shop वालास. Yes, so these people are very bad at giving chicken leg piece. तोड़ के, मतलब कितने legs तोड़ते होंगे, कितने chicken को मारते होंगे. तो ऐसे लोगों की कंपनी थी. They came to meet His Holiness Gopal Krishna Maharaj, and they told that we want to give big donation for NVCC project. हम देना चाहते हैं. महाराज immediately said, बिल्कुल नहीं, कोई वास्ता नहीं आप लोगों से.
And everyone was saying, oh, सबका पैसा लगाना चाहिए. But no, the way in which that money is earned, that matters a lot. So similarly, Advaita Acharya, if he goes and takes charity from kings, that's what he's asking. No? 300 रुपए माफ कर दो. 300 रुपए माफ कर दो मतलब 300 रुपए दान दे दो. वही तो मांग रहे. So if you're doing that, then Vishaira Anna Khaila Dushta Hoya Man. So if you are accepting such kind of charity, such kind of चीजें, ऐसे लोगों से फेवर लिया तो मन खराब हो जाएगा. और मन खराब होने के बाद वो मन कृष्ण में भजन नहीं लगेगा. Got it? We cannot do Krishna bhajan because of that polluted mind. So see how deep science is explaining. And that is why Brahmanas should not accept charity from any person indiscriminately. Yes, we have to be very careful, especially the Brahman class. The Brahman class, the Vaishnavas, they have to be very, very careful. The spiritual masters, very, very careful. You should not accept charity from persons who do not follow Vaishnava principles. Nahi. Especially उनके घर में जाके भोजन करना, no, we cannot digest. वो खाएंगे तो हमारी मति भ्रष्ट हो जाएगी, and we will not be able to do Krishna bhajan. Now here, what will happen with dushta man? He is explaining next. मन दुष्ट हईले नाहे कृष्णे रस्मरण कृष्ण स्मृति विनु हय निष्फल जीवन. एक बार मन दुष्ट हो गया, once the man becomes dushta, we will not be able to remember Krishna. We chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, कुछ हो ही नहीं रहा है. We are not able to actually chant the holy name. We are chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, कुछ feeling ही नहीं आ रहा है. It will not come. And without such remembrance of Krishna, without such genuine feelings for Krishna, life is waste. तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की. So everything starts with what? Prasad. Vishair anna khaila dushta haya man. So we should be very, very careful where we are eating and what we are eating. Hotel में खाएंगे? Huh? What is that? Sukh Sagar, huh? I asked last time which is the biggest hotel joint. They said some Sukh Sagar. अच्छा VIT college नहीं, हर जगह है, यहाँ पे भी है, हर जगह सुख सागर. They promise name like that. सुख का सागर है, आ जाओ सागर में आ जाओ सुख के. But that is दुखेर सागर. There is a bhajan also. दुखेर सागरे पोडियाची उद्धारिये जानी ना. That is not Sukh Sagar. The real Sukh Sagar is here. Please come and associate with Vaishnavas. Do Harinam Sankirtan. Take prasad here. How many of you had yesterday's Sunday feast prasad? सबने खाया क्या? Very nice. मुझे छोड़ के सबने खाया. Because of course, my parents had brought something special. That's why I didn't take it all of you. But anyways, so that is Sukh Sagar, the real Sukh Sagar. Otherwise, it is Dukher Sagar. This material word is Dukher Sagar. So symptom of Vaishnava means Avyarta Kalatvam. That is mentioned in the purport by Srila Prabhupada. He will not waste a single moment without Krishna. So प्रसाद खाएंगे तो हमारी मति ऐसे बनेगी कि हम एक मोमेंट भी कृष्ण के बिना नहीं स्पेंड करेंगे. We always want to be with Krishna. We will always try to be Krishna conscious. ऐसे बनेंगे हम. प्रसाद खा के अलर्ट. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षणः. इस तरीके से we should honor prasad and distribute prasad. Last. लोक लज्जा हय धर्म कीर्ति हय हानि अच्छे कर्म ना करिह प्रभु इह जाने. See, once एक बार लोगों के सामने रेपुटेशन डैमेज हो गया, खत्म, फिर सब खत्म हो जाएगा. धर्म कीर्ति हय हानि. Then Advaita Acharya will lose respect. Correct? And once he loses respect, then nobody will respect him as guru, spiritual master. Correct? So it is a duty of a servant, subordinate, student, disciple. It is his duty to protect the glory of the spiritual master.
और तुमने एग्जैक्टली वैसे उल्टा किया. You have not protected the glory. You have criticized him. Tomorrow when people come to know that Advaita Acharya ने भीख मांगी थी राजा से, so what will people think? अरे राजा से क्या संबंध है इसका? हाँ? राजा और एक साधु का संबंध कुछ ठीक नहीं लग रहा है. और they will see चैतन्य महाप्रभु तो राजा से दूर रहते हैं. He stays far away from kings. Why is this fellow getting close? विषय के इतने पास क्यों आ रहे हैं? So like that people will start talking about it. Sanyasira alpachidra sarvalokagai. See, the moment somebody does mistake in society, there is no problem. ये लोग अरे कलयुग is ocean of faults. अरे उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा किया, वो सब ठीक है. But Sanyasira alpachidra, sannyasi and such Vaishnavas were great souls. They are like white and white dhoti. They become like what? White and white dhoti. And white and white dhoti के ऊपर एक छोटा सा भी मार्क लग गया, छोटा, so small mark that is there, क्या हो जाता है? दिख जाता है. And that's something the world will see. So that is why we have to be very, very careful. Right? That's what Sri Chaitanya Mahaprabhu is trying to explain. Moving on. So till here he instructed. So now here वापिस wind up करते लीला. ए शिक्षा सभा करे सबे मन कैला, आचार्य गोसाई मने आनंदित पाइला. So एक तरीके से बहुत डीप शिक्षा है. Nobody thinks so deeply. Correct? हम लोग डील करते तो कैसे सोचते हैं? हाँ कर दिया, उसमें क्या है, कर दिया, बोल दिया. हाँ. But you see here Vaishnavas, before they deal or before they think of something, before they say something, there's a deep thought process based on principles and shastras before they deal. इस तरीके का डीलिंग हमें करना चाहिए. We should have very, very deep thought process. हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? Very deep intention and very deep shastras analysis, and then we should talk. Correct? तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अरे इसने तो अच्छा ही किया ना, अद्वैत आचार्य भगवान है, भगवान को तुम दान दो. बिल्कुल नहीं. But Sri Chaitanya Mahaprabhu was not happy. See, such a very deep dealing. So this is lesson for all of us. That's what Krishnadas Kaviraj Goswami is telling. Next. आचार्येर अभिप्राय प्रभु मात्र भुजे, प्रभुर गंभीर वाक्य आचार्य समुझे. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was looking at Advaita Acharya was looking at Chaitanya Mahaprabhu. And Sri Chaitanya Mahaprabhu understood heart of Advaita Acharya understood the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. दोनों ही समझ पाए, बाकी कोई समझ में नहीं आया. That's what happened to others. So they were very deep and enigmatic. एत प्रस्तावे आछे बहुत विचार, ग्रंथ बाहुलिया भये नाहिका लिखी बार. So actually this pastime, this statement can be analyzed very, very deeply, but I am not going to do that. मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, मेरा बुक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. I am already 90-year-old. मैं कभी भी जा सकता हूँ. Krishnadas Goswami Kaviraj is telling clearly, I can be off at any time. So जाने से पहले लीला लिख के जाना है मेरे को, right? तो इसलिए मैं ज्यादा डीपली एनालाइज नहीं कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट खटाखट हम लोग फिनिश कर सकते हैं. चले स्पीड पकड़े. तेज स्पीड. यदुनंदन आचार्य के कुछ ब्रांचेस, सब ब्रांचेस के बारे में वेरी क्विकली, एंड देन देयर आर नेम्स ओनली. नेम्स वी विल नॉट डिस्कस. श्री यदुनंदन आचार्य अद्वैतेय शाखा, तार शाखा उपशाखा नाही है लेखा. The fifth branch of Advaita Acharya is Yadunandan Acharya. And Yadunandan Acharya comes in the branch of Advaita Acharya. And Tara Upashaka, Shaka Upashaka, his branch, his sub-branch, nahi hai lekha, अरे इतना नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत बड़ा है. But who is Yadunandan Acharya? He is very special. Yadunandan Acharya is the spiritual master of Raghunath Das Goswami. And Raghunath Das Goswami जीवन भर क्या किए?
194 rounds chanting, bhajan. See, Chaitanya Mahaprabhu gave different instruction to other Goswamis. सब Goswami को अलग अलग instruction. तो रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या instruction? तुम सिर्फ भजन करो. That's all. And he was doing bhajan without even bhajan kutir. Correct? So वैसे यार कभी कभी शेर आ जाता था. शेर को भगाने के लिए कृष्णा हट कृष्णा used to come with stick. And Sanatan Goswami used to say, अरे रघुनाथ बनाना भजन कुटीर प्लीज. कृष्ण को तेरी सेवा करने को आना पड़े. एक शेर आता है कृष्ण भगाने को आते हैं और तुम मस्त हरे कृष्णा कर रहे हो. कुटीर बनाओ. हाँ कुटीर बनाते, लेकिन उसको भजन के लिए इतना टाइम भजन में मग्न था कि कुटीर बनाने के लिए टाइम था ही नहीं. तो एक बार बहुत कड़ी धूप थी. तो समर सीजन में वृंदावन में समर गोज अप टिल 50-55 ऑल्सो. हीट स्ट्रोक सब आता है. समर्स आर वेरी वेरी बैड. तो वहां पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु सॉरी रघुनाथ दास गोस्वामी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण. एंड दैट टाइम वन गर्ल केम, ब्यूटीफुल गर्ल, गोल्डन गर्ल. एंड अपनी साड़ी के पल्लू से वो ऐसा करके रोक रही थी और वो खुद धूप खा रही थी. कौन थी वो लड़की? राधा रानी. She had come and she was doing like this. And Sanatan Goswami saw this. And this time he went, hey Raghunath, तू वृंदावन क्यों आया है? तू राधा कृष्ण की सेवा करने आया है, सेवा लेने आया है? You come to take सेवा from Radha Krishna? What is this? And then finally pressurizes, तू भजन कुटीर बना ही ले. तो भजन कुटीर बना देते हैं. They make the bhajan kutir for him, and then Raghunath sits in bhajan kutir, and his whole life what he has done? Bhajan. Why? Because Yadunandan Acharya was going somewhere, and small Raghunath, he asked that where are you going? He said, I'm going to meet a very great soul. Great soul, मुझे भी आके मिलना है. But he stays in caves. मुझे भी देखना है. But sometimes in that cave some snake also lives. कोई बात नहीं, मुझे वो great soul को देखना है. And who was that great soul? Haridas Thakur. So Raghunath went, and the first impression he got from Haridas Thakur, it was love at first sight. And as soon as he saw Haridas Thakur, ने बोला मेरे को ऐसे ही बनना है. He was his role model because Haridas Thakur बाबा क्या करते थे? समझो, chanting. He got great inspiration from Haridas Thakur. So it was Yadunandan Acharya who took Raghunath, Chota Raghunath, to meet Advaita Acharya, to meet Haridas Thakur. And there he analyzed, अरे मेरे पापा कौन है? गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, दे आर बिग मजुमदार्स, बड़े कलेक्टर्स. एंड उनके पास बहुत बहुत पैसा है. दे हैव सो मच मनी. बट दिस बाबा डजंट हैव एनी मनी. यस वन केव. वो केव भी उनका थोड़ी है. गुफा में वो रहते हैं और गुफा में सांप है, बिच्छू है, सबको है. इट्स एवरीवन्स गुफा. एंड ही सिट्स देयर एंड चैंट्स हरे कृष्णा. ये बाबा वहां बैठ के मस्त चैंटिंग करते हैं. बट the kind of happiness, that bliss that this Baba has, my Baba doesn't have. मेरे बाबा के पास नहीं है वो. मेरे बाबा के पास पैसा बहुत है लेकिन वो आनंद नहीं है. इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन परम आनंद है, हरि नाम का आनंद है. So I don't want this. मेरे को ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए what that Baba has, हरि नाम. So this Yadunandan Acharya was instrumental in getting Raghunath Das Goswami. He is a guru of Raghunath. दीक्षा उनसे ही दी. और फिर later on he went to श्री चैतन्य महाप्रभु. वासुदेव दत्ते रते हो कृपार भजन, सर्व भावे आश्री आचे चैतन्य चरण. ओ सो यदुनंदन आचार्य कौन है? सो यहाँ देखा जाए तो वासुदेव दत्त, हु इज वासुदेव दत्त? प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज became Vasudev Dutt. And his student was Yadunandan Acharya. He was his disciple, but he was the branch. Service authority is Advaita Acharya. So Vasudev Dutt had purchased, because in Mahaprakash Leela, Vasudev Dutt had gone. We discussed this already. He had gone to Sri Chaitanya Mahaprabhu and told him that I have one desire. What is your desire? I have a desire that let all the living entities, sinful living entities in the whole material world, all of them, their sins I will take. And you send everyone back to Godhead. And for their sins, I will suffer in hell. But उन सबको back to Godhead भेज दीजिए.
Sri Chaitanya Mahaprabhu saw this compassion in the heart. He saw the compassion and he said that you can be no other than Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj के पास इतना compassion है, आप प्रहलाद हो पिछले जन्म में. And your desire of liberating all living entities and dispatching them back to God, I'll fulfill immediately. You don't have to go to hell. तुम्हें नरक में जाने की जरूरत है. Right? So this is the compassion that Vasudeva Datta had. And such a compassionate person, student is? Yes. And Prabhupada writes that Vasudeva Datta was Prahlad. And along with that, also if you see, Vasudeva Datta was in Vrindavan Leela also. Madhuvrat is a great singer in Vrindavan, Madhuvrat Prabhu. He is Krishna's singer. 50. Vasudeva Leper is in Kurma Kshetra. There's Vasudeva Ghosh also, he is singer. Vasudeva Ghosh, Madhav Ghosh, Govind Ghosh, three Ghosh brothers. Vasudeva Datta is different. चलो हम लोग अभी क्या करेंगे 58 to 65 इतने श्लोकों में अद्वैत आचार्य के ब्रांच नंबर 6 to 38 सारे आ जाते हैं. सो लेट्स जस्ट गो रैपिड फायर. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है. you all can read the names yourself. भागवत आचार्य आर्य, विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणी आचार्य आर्य, अनंत आचार्य, नंदिनी आर्य, कामदेव चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास आर्य, वनमाली दास, जगन्नाथ कर आर्य कर भवनाथ, हृदयानंद सेन आर्य दास भोलानाथ, यादव दास विजय दास दास जनार्दन, अनंत दास कानु पंडित दास नारायण, श्रीवत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर्य कृष्णदास, पुरुषोत्तम पंडित आर्य रघुनाथ, वनमाली कविचंद्र आर्य विद्यानाथ, वैद्यनाथ, लोकनाथ पंडित आर्य मुरारी पंडित, श्री हरि चरण आर्य माधव पंडित, विजय पंडित आर्य पंडित श्री राम, असंख्य अद्वैत शाखा कतलई बना. लास्ट में क्या बोला गया? असंख्य अद्वैत शाखा. अरे भाई काउंट नहीं कर पाएंगे आप लोग, इतना है. कतलई बना, कितना नाम हुआ? These are all the different branches. So Shri Ram Pandit is Parvat Muni mentioned already. Okay. Shri Ram Pandit अद्वैताचार्य के ब्रांच पे भी आते हैं, श्रीवास ठाकुर के ब्रांच पे भी थे, इधर भी आते हैं. तो दो ब्रांचेस में सेवा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो अभी नाउ इफ यू सी, हमारे पास समय है थोड़ा, डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ है. आज हम लोग जो है अद्वैत आचार्य के ब्रांच को फिनिश करके ही छोड़ेंगे. तो आज फिनिश होगा. सभी अद्वैत आचार्य के ब्रांच के साथ क्या हुआ, इन सब ब्रांचेस के साथ क्या हुआ, देखिए व्हाट हैपेंड टू दिस ब्रांचेस. माली दत्त जल अद्वैत स्कंद योगाय, सेई जले जिये शाखा फूल फल पाय. माली कौन है? फिर से रिवीजन. हु इज माली? Chaitanya Mahaprabhu. So the gardener gave wonderful water, jale, and because of that jal, Advaita Acharya Skanda, the branches of Advaita Acharya, what happened? Yogaya, he supplied, and Sai jale jiye shaka phula phalapaya. Lot of fruits and flowers grew in this branch. Lots.
And now there are some थोड़ा villains, ungrateful branches. उसके बारे में बोला गया है. यार मध्ये माली पाचे कोण शाखा गड़ा न माने चैतन्य माली दुर्दैव कारण. तो अद्वैत आचार्य के कुछ ब्रांचेस को पानी नहीं दिया गया, दुर्दैव कारण, बिकॉज ऑफ समथिंग अनफॉर्चुनेट दे डिविएटेड फ्रॉम द पाथ. सो डिविएशंस को पानी नहीं मिला. सृजैला जी आला तारे ना मानिला कृतघ्न हैला तारे स्कंद क्रुद्ध होईला. कृतघ्न. See, the greatest frailty of human character is ingratitude. जिसके पास gratitude नहीं है. So these all branches became ungrateful branches, because of which Mahaprabhu was very kruddha haila. He became very angry with them and did not get mercy. Kruddha haya skanda tare jalana sanchare jala bhave krisha shaka shukhiya mare. So kruddha haya skanda, because Mahaprabhu became angry on these branches, jalana sanchari. He did not give water, and because they did not get water, जल का अभाव के कारण कृष्ण शाखा छोटा 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 होता गया और सूखिया. It became dried up and morijai, became dead. So now what happens to non-devotees? The moment you deviate from parampara or you become ungrateful to your guru, you become asar. So उनके साथ क्या होता है, ये 3 श्लोक में बोला गया है, जल्दी पढ़ेंगे. चैतन्य रहित देह शुक्काकाष्ठ शम जीविते मृत से मैले दंडे यम. चैतन्य रहित देह. So without the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the body becomes suksha kashtha sama. That means just like a dry wood. एक सूखी लकड़ी की तरह बन जाता है. And जीविते मृत से, even while living is as good as dead. And after death, मैले दंडे यम, यमराज will punish these people. वो यम का दंड मिलेगा, justice. Next, केवल गण प्रति नहे दंड चैतन्य विमुख है से पाषंड. अरे सिर्फ अद्वैताचार्य के डिविएंट ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं. जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विमुख हो जाएगा, एनीवन हु टर्न्स देयर फेसेस अवे, हु लूजेस द मर्सी ऑफ महाप्रभु, विल सफर द सेम फेट. 72. की पंडित की तपस्वी की बा गृही याति चैतन्य विमुख यही तारा यही गति. कोई पंडित हो सकता है, शास्त्र अच्छे से पढ़ लिया है. की तपस्वी, कोई बड़ा तपस्या करता है. किबा गृही, somebody is a successful grihastha. And kiba yati, somebody has become a sannyasi. So what? You may be successful at all this, but Sri Chaitanya Vimukha, you are turned your face away from Chaitanya Mahaprabhu. Yehi taragati. They will also be punished by Yamraj. So last conclusion. The last section 73 to 78 बहुत क्विकली करके हम लोग आज के सत्र को विराम दे देंगे. गदाधर पंडित का ब्रांच तो कुछ है, सिर्फ नाम है. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, गदाधर पंडित ब्रांच विल कंप्लीट एंड वी विल आल्सो स्टार्ट द पास्ट टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. हरि बोल. ये लैला श्री अच्युतानंदे रमत से आचार्य गण महाभागवत. So all those who became Achyutananda is the first branch, no? Who all became the followers of Achyutananda? Aj became Mahabhag. They all became pure devotees. Hari Bol. Pure devotees of Lord.
So Prabhupada in the purport speaks about Hindu. Where this word, you will not find such word Hindu in any Vedic literature. Hindu religion. ये क्या Hindu people spoiling the Hindu religion like that. So Prabhupada says the word Hindu comes from Hindu Kush. There's a Hindu Kush mountain. So Indus, Sindhu नदी, उसके आगे जो रहते हैं वो कौन बनते हैं? हिंदू. ऐसा आया. Prabhupada just mentions that. The ISKCON branch is directly watered by Chaitanya Mahaprabhu, and that is why we are successful. Whereas the disconnected branches of the so-called Hindu religious who are envious of ISKCON are drying up and dying. ये प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है इस पर. नेक्स्ट. सेई आचार्य कृपार भजन अनायासे पाइला सेई चैतन्य चरण. Yes. So whoever took shelter of Advaita Acharya and his branches, they all got mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately. Anayase, easily they got. Achyutera yehi mat sehi mat sar. Arayat mat sab haila charakhar. So it should be concluded that Achyutananda, जो अच्युतानंद को फॉलो किया, they got the essence of spiritual life. उनको जीवन का सार मिल गया. On the other hand, बाकी सब छारखार इधर उधर चले गए. सेई आचार्य गणे मोर कोटि नमस्कार. अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन यहार. So he is telling that कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ किसको? All the Achyutananda's branch, especially because Achyutananda को जो है चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई जीवन है ही. Doesn't have any other life. एत कहिला आचार्य गोसाई रगण तीन स्कंद शाखा कैला संक्षेप गणन. So I have told now about Advaita Acharya's branch. In that also 3 branches are very important. Achyutananda, Krishna Mishra and Gopal, the 3 first sons. Shaka upashaka tara nahi ka ganana. Ichu matra kahi kare diga darshana. So again he's saying the same thing, that I cannot actually enumerate all the branches. It's not practically possible. So I've given only description of few branches. So totally he has given 38 branches of Advaita Acharya. Itna hi de paaye. So we will conclude here right now. It's 8:30, and we will complete our Gadadhar Pandit's branches in the next class. वो तो हो जाएगा, कुछ नहीं, नाम ही है. और उसके बाद फलश्रुति मिलेगी हमें. अलग अलग ब्रांचेस के बारे में सुनने का क्या लाभ है. We have all heard the branches, but what exactly is the benefit? That's something Falashruti will see next time. And then we will begin the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. लीला शुरू हो गई. Philosophy 12 में philosophy सब खत्म. हरि बोल. It's all over. Now we are going to begin pure pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You all want to hear pastimes of Chaitanya Mahaprabhu? Then please come for next class. हरे कृष्णा. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्री चैतन्य चरितामृत की जय. श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय. समस्त गौर भक्त वृंद की, विवासी भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी.